Hello everyone, good afternoon all of you. I hope you are fine. Today we are starting with our that next topic we discussed already in last class, complete unit of the gravitation. Today we will discuss some question related to our gravitation. Okay. Then I hope beta you have revised this complete unit. Before this one we will do revision of this one unit. In gravitation beta we discuss in gravitation unit this one unit is going on. So before this question we will take out this one, some view of this one. First, universal of the gravitation, F equal to G m1 m2 by your r square. Universal law of the gravitation, that is explaining about the magnitude of the gravitation force that is exerting between the two masses, body mass m1 and m2. Okay, and G is the universal gravitation constant, 6.6 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square minus kg minus 2. Okay, then after that beta we discuss the acceleration due to gravity. G is equal to your gm by your r square on the surface of the earth. Where? Surface of the earth. Acceleration due to gravity on the surface of the earth, when we will solve it then it will give us a constant value for our earth, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके लिए हमारी अर्थ के ऊपर है. ओके, आफ्टर दैट g इज एट दी हाइट. वी डिस्कस्ड बेटा हाइट के ऊपर g की वैल्यू में क्या वेरिएशन आता है, क्या चेंज होता है. दैट इज इक्वल टू स्मॉल g डैश इक्वल टू g 1 minus 2h by r. This one acceleration due to gravity at the h height, then due to the depth, then how much change in our g dash, then g is equal to 1 minus t by r. Okay, this one is acceleration due to gravity at the d depth. As we are going on the center, so earth center g on the center of the earth, then it will be equal to 0. g on the center of earth, earth के center पे g की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. एंड इट विल बी मैक्सिमम ऑन पोल. मैक्सिमम किस पे होती है, पोल पे, और मिनिमम किस पे होती है, इक्वेटर पे. इट विल बी मिनिमम ऑन इक्वेटर. इट विल बी मिनिमम ऑन इक्वेटर. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था बेटा दिस acceleration due to gravity and what are the variation in the acceleration due to gravity as we are going above the earth surface, as we are going inside the earth surface. After that there we have discussed beta gravitational field intensity. What gravitation field intensity we discussed, and what is gravitation field intensity? That is equal to your force per unit mass, that is gravitation field intensity. So here this one will be equal to your gm m by r square and divide by m, that we can write there gm by r square, that is equal to your g only, acceleration due to gravity only. After that gravitational field potential energy. What? Gravitation potential energy. Gravitation potential energy is equal to your minus gmm by r. This one gravitation potential energy. After that your gravitation potential and potential only. Gravitation potential होता है potential energy. ये क्या आपकी potential energy u, work done, we can write there work done per unit mass, then we can call it gravitation potential. So work done equal to potential energy is equal to your gm m by r divide by your mass only. So this one left here gm by r. This one your gravitation potential only, and this one gravitation potential energy. Okay, after that we discussed beta this one your total energy. Total energy, this one equal to your potential energy plus your kinetic energy. Potential energy, gravitation potential energy is equal to minus gmm by r. Okay, plus your kinetic energy. Kinetic energy is equal to gm by 2r. So as we will solve this one, then our value of this one total energy will become gmm by 2r. This one our total energy of the satellite revolving around the earth. Okay, so after this one we discussed beta orbital velocity and escape velocity. Escape velocity, this one here under root g r. Okay, if we are taking this one near the earth surface, otherwise we can write there under root g m by your
r this one. ओके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे r to r, दैट्स व्हाई वी कैन राइट देयर स्मॉल g. जब इसको क्या है g से ऊपर नीचे क्या है r to r मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देता है r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं gmr स्क्वायर बाय स्मॉल g. सो नेक्स्ट ईयर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है आपकी अंडर रूट gr. सो रिलेशन बिटवीन देम वी कैन राइट देयर एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट टू ऑर्बिटल वेलोसिटी. क्या आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी. क्लियर. ये था हमारा व्यू ऑफ द ग्रेविटेशन. इसके बाद हमने डिस्कस किया था केपलर 3 लॉज बेटा अबाउट दी अर्थ रोटेशन अलोंग दी सन, कि सन के चारों तरफ अर्थ कैसे रोटेट कर रही है. इन इलिप्टिकल पाथ स्विफ्ट इक्वल एरिया फॉलो द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देन t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस रेडियाई. ओके सो दीज आर द कंप्लीट यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन. बेटा ग्रेविटेशन में हमने ये सब डिस्कस किया था. टुडे वी विल discuss some question related to our gravitation chapter. So how we will do this one? First one question we will discuss beta. A satellite in a force free space swept stationary in planetary dust at the rate of this one. ये कह रहा है कि सैटेलाइट है, फोर्स फ्री स्पेस है, स्विप कर रहा है स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट दिस वन, एट रेट दिस वन dm/dt इज इक्वल टू अल्फा वी. इसका मीनिंग क्या है कि मास डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम कितना, दैट इज अल्फा वी. dm/dt का मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज नोन इज गिवन हियर अल्फा वी. m इज मास हियर and here v is the velocity of the satellite and alpha is our constant. m क्या मास. तो कह रहा है फाइंड देयर एक्सेलरेशन. तो हमें क्या निकालनी, एक्सेलरेशन हमें निकालनी. Understood? So how we can find this one acceleration beta? So as we know this one, a satellite in a force free space. Clear? Force is given. So here as we know this one, as we know force is equal to here dp/dt. Yes na? This one we know about this one dp/dt. So here we can write this one beta dp/dt we can write there d/dt. mv we can write there. If your mass is given here capital M, so here we can write there dm/dt into your v. Yes, dm/dt this one, or dm/dt is a mass and rate of change of mass per unit time, this one given in our question, that is here alpha v. Okay, so from here we can write there beta that is equal to here dm, put here value of this one dm/dt is equal to here alpha v. Okay, and this one our v already. So from here we can write there beta that is alpha v square. Clear? Then this one our force and this one moving with that acceleration, which one we have to find out. So we know about this one F equal to ma. So mass capital A is given, then alpha v square. If we will divide this one with their mass, then we will get their acceleration alpha v square divided by your m. Okay, so you can check beta here rate of change of mass is take place, that's why here we will take their negative sign we will take, because your mass is decreasing continuously at that rate, that's why here we will use their negative. So here positive, here will become negative. I hope you understood beta. Force we know about this one F equal to ma, that is equal to your dp/dt. यहाँ पे लिख सकते हैं F equal to ma, that is dp/dt. अगर मास आपका चेंज हो रहा है, so in case of the rate of change of mass, then we can write there dm/dt. And dm/dt हमारे क्वेश्चन में given है बेटा. This one is a decreasing with rate time. Okay, that's why we are taking negative. So dm/dt we can write there alpha v as it is. अब इसको सोल्व कर देंगे, then we can write there with divide by your time. तो टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगी. So you can check your option, which one will be right option. A is your wrong option, B is our right option. So B is our right answer of this one question. I hope you understood beta. Next question of this one is a revision. Next question we can see escape velocity of a body 1 kg mass on a planet is your 100 meter per second.
then find their potential energy. Gravitation potential of the planet will be equal to this one. तो आपको क्या गिवन है बेटा, मास ऑफ द बॉडी इज गिवन इन आवर क्वेश्चन 1 kg. अब कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ अ प्लेनेट इज दिस वन, कि कोई प्लेनेट है, एस्केप वेलोसिटी क्या बताई थी, दैट इज अ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केपिंग आउट द फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, दैट इज नोन एज द एस्केप वेलोसिटी. तो इसकी एस्केप वेलोसिटी कह रहा है 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम दिस वन प्लेनेट. ये आपका प्लेनेट गिवन, इस प्लेनेट से एस्केप वेलोसिटी ये गिवन है. और बॉडी का मास क्या गिवन है आपको, escape velocity of a body of 1 kg mass on the planet is this one. So gravitation potential of this one we have to find out. So gravitation potential energy we know about this one, minus gmm by your r. This one gravitation potential energy. So your gravitation potential energy of this one, escape velocity हमें पता है, that is equal to your ve. We can write there as we know VE क्या होता है, अंडर रूट ईयर 2gm by ईयर आर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट वी कैन यूज दिस वन. ओके, इसको हम यूज कर सकते हैं. सो हियर वी कैन फाइंड बेटा gm by r वैल्यू. टेक बोथ साइड स्क्वायर, इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. So here we can write there V is square equal to 2gm by r. Square लेंगे, square लेने के बाद क्या होगा, then here we are taking square, then it will be square, then it will be square, then 2 cancel out हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, V is square 2gmr. ओके, तो यहाँ से gmr by क्या आ जाएगा, gm by r equal to our V is square by, क्योंकि हमें क्या गिवन है बेटा, एस्केप वेलोसिटी गिवन है. सो हमारी क्या होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज दिस वन. ग्रेविटेशन पोटेंशियल ये है, तो यहाँ पे हम gm by r की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो v क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू यार दिस वन फैक्टर gm by r. gm by r की वैल्यू हमें क्या मिल गई, v e स्क्वायर by 2. यूज दिस वन, देन हियर माइनस v e by 2 स्क्वायर. Putting value of this one relation, then here will be equal to your m. Okay, so here minus only v e given अपने क्वेश्चन में, that is your 100 only. So square of this one your 10,000 divided by 24 into your mass of this one body is given your 1. Okay, so as we will solve this one beta, then after solving this one, then here will become square will be beta of 2 only. यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ VE का स्क्वायर है, सॉरी VE स्क्वायर गिवन है, 2 का स्क्वायर नहीं, इधर 2 ओनली विल बी देयर. सो कैंसल दिस वन, देन वी विल सोल्व दिस वन, देन हियर विल बिकम योर 5000. योर एनर्जी in your option is given your energy joule only, then it will be minus 5000 joule. So check your option which one is right, then first only will be right option. So I hope you understood बेटा. आपको गिवन थी एस्केप वेलोसिटी, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड. मास गिवन था बॉडी का, यहाँ से प्लेनेट है, यहाँ पे बॉडी है, इस बॉडी को इजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मास क्या गिवन आपको, 1 kg मास गिवन है. ना तो हमें प्लेनेट का मास गिवन है, ना डिस्टेंस गिवन है, कहाँ से कहाँ हमने इजेक्ट किया है, बट एस्केप वेलोसिटी गिवन है. सो यूजिंग दिस एस्केप वेलोसिटी वी विल अप्लाई इन अ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस gmm by r. Okay, so this one relation we can write there, escape velocity about this one we know about, then under root 2 gm by r. तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के क्या है, इस फॉर्मूले को VE की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो VE की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा minus 5000. ओके, सो next one question, how we can solve radii of the circular orbit of the two satellite A and B on the of the earth 4 and r respectively. क्लियर, ये कह रहा है कि दो सैटेलाइट है जिनकी रेडियाई क्या है, 4r and r. तो ये कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ दिस वन, 2 सैटेलाइट्स आर देयर, ये आपकी अर्थ है, क्लियर, सैटेलाइट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड देयर. अर्थ के चारों तरफ 2 सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, 1 and second will be this one. Clear, one satellite is here and second satellite you can write there.
सो हियर क्वेश्चन में कह रहा है रेडियाई ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ए एंड बी, टू सैटेलाइट आर गिवन, देन 4r and 2r मींस ए जो आपको गिवन है वो ए ये है, बी ये वाला बेटा बड़े वाला 4r दिस वन एंड r इज दिस वन, ओके। रिस्पेक्टिवली स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ए, इस सैटेलाइट ए की स्पीड क्या गिवन है, मींस ऑर्बिट के अंदर अगर रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट विद सम वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी वी विल कॉल इट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको क्या गिवन है, 3v गिवन है। तो कह रहा है कि बी जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वन, बी इज दिस वन ना, तो कह रहा है कि बी जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ऑफ दिस वन, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, अंडरस्टूड। सो हाउ वी कैन फाइंड बेटा, इस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है तो मींस क्या गिवन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन है, ओके। तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है अगर ये पाथ डिफरेंस अब हमें पता है। सो एज वी नो ऑर्बिटल वेलोसिटी of any satellite will be under root gm/r, ये हमें पता है, क्लियर। तो ये कह रहा है कि ऑर्बिटल सैटेलाइट ऑफ द ए, ऑर्बिटल सैटेलाइट ऑफ ए बॉडी इज गिवन हियर 3v, सो दिस वन वी कैन राइट देयर अंडर रूट g, m इज मास ऑफ द अर्थ, दोनों ही किसके सैटेलाइट है, अर्थ के मास के है, तो मास क्या रहेगा आपका, कॉमन रहेगा बेटा gm/r, r व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट। तो ए के लिए हम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कितना गिवन आपको, 4r गिवन, ओके। सो आफ्टर दिस वन हियर वी कैन राइट बेटा VO, सेकंड बॉडी VOB, हियर दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट, इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। इफ दिस वन हियर 4gm/r, r हमें गिवन, सो हियर वी कैन write beta this one first and second, this one first equation, this one second equation, v a के लिए है, ये b के orbital velocity है। so by using these both factor we can find their by using ratio, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, हमें ये वाली चाहिए तो then we can write there VO divided by your V। So here VOB we have to find out, VOA given here 3V, क्या given आपके पास 3V given है। So here we can write there VOB this one under root gm/r divided by under root gm/4r, क्लियर। सो दिस टू दिस कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपके पास अंडर रूट 4r/r, अंडर रूट 4r/r, तो यहाँ से क्या है r से r कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा आपका अंडर रूट 4, एंड अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा VOB इक्वल टू 3V इक्वल टू 2, सोल्व करने के बाद ये आ गया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी विल बिकम बेटा 6v, क्या आ जाएगी पास 6v, v यूनिट नहीं है बेटा, दिस वन इज अ वेलोसिटी, मल्टीपल गिवन आपको यहाँ 3v, ओके। सो योर आंसर विल बी ऑफ दिस वन 3v। तो सेकंड बॉडी कह रहा था जो b जो है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, देन इट विल बी मूव विद योर 6v, दिस वन योर 3v एंड दिस इज मूविंग विद योर 6v, okay। I hope you understood beta how you can find, first we will write their orbital velocity, then we will write the orbital velocity of the both satellite A and B, then take the ratio of this between them, after the ratio then we will solve it, then it will give us 6v। now see our next question, a satellite of mass m is circulating around the earth, कि एक सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। वन सैटेलाइट इज देयर दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ हुज मास इज m, जिसका मास क्या गिवन आपको, इस सैटेलाइट की मास क्या गिवन है, m गिवन है, देन सर्कुलेटिंग अराउंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी मींस दैट इज योर ओमेगा ओनली। सो इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r0, इस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या गिवन आपको r0 गिवन है, एंड मास ऑफ द अर्थ इज गिवन m, देन योर फाइंड देयर एंगुलर मोमेंटम।
angular momentum about the center. Angular momentum we have to find out. So how we can find beta? According to these given term, then we know about this one angular momentum. अब ये satellite क्या कर रहा है? Revolve कर रहा है. During the revolution of the satellite around the earth, then which velocity will be act there? Orbital velocity. Okay, so orbital velocity of satellite will be there here under root gm by r. Okay, m is mass of the earth we have taken and r is a distance from here to their satellite given आपके क्वेश्चन में r naught. So now angular momentum will be L equal to बेटा क्या होता है? ये आपका R क्रॉस P होता है एक्चुअल में. तो so in linear form we can write there MVR only. P equal to MV, R your distance along this one axis is rotation, perpendicular distance from the axis of the rotation, this one your R. So P is your linear momentum equal to MV. So we can write there L equal to your MVR. So M is your body of this one that is moving this one along. So your mass of the satellite is given your m only, so that's why your m. V is the velocity by which it is a revolving around the earth. कि वो satellite revolve कर रहा है जिस velocity के साथ, and that velocity is equal to this one. So here we can write there under root gm by r naught, and r is a perpendicular distance from the axis of the rotation, and this one distance is equal to your r naught only. Clear? तो यहाँ तक सोल्व हो गया. Further we will solve this one. Then here we can write this one here L equal to your m under root your gm, and this one your r naught to r. इसको अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? Under root r naught. So here will be your under root r naught. This one our angular momentum which is acting when the satellite is revolving around the earth. Like this one we can find. So how much will be there? Which one is the right option? M, this one here capital M is there beta multiple, but here is the mass of the satellite, not your mass of earth. Okay, that's why here this one option will be right option, remaining will be wrong. Like this one we can find it. Now see our next question. An energy which is required to transfer a 400 kg satellite in a circular orbit of radii this one to the circular orbit of this one, then एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर. ये कह रहा है कि आपको एनर्जी फाइंड करनी है टू ट्रांसफर अ 40 kg सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू सर्कुलर ऑर्बिट टू द 4r. ओके, तो ये अगर आपकी अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है. इनिशियली दैट सैटेलाइट, दिस वन सैटेलाइट S1 वी कैन राइट दैट द सैटेलाइट इज टेकिंग द रेडियस 2r. क्या है? 2r. क्लियर? तो जैसे ये कह रहा है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ट्रांसफर करने के लिए, इसका मास क्या गिवन आपको? मास ऑफ सैटेलाइट गिवन 400 kg, और इनिशियली यू कैन राइट देयर रेडियस ऑफ दिस वन गिवन हियर 2r. तो कह रहा है इस पाथ से सेकंड पाथ में आने के लिए कितनी एनर्जी की नीड होगी, इससे इसमें आने के लिए, जहां पे इसका डिस्टेंस क्या है 4r हो गया. तो आपको निकालना है एनर्जी. R2 equal to your 4r, then find there how much energy will be transferred from here to there. So again how we can find this one? Total energy की बात करें कि यहाँ से यहाँ तक कितनी requirement होगी. So energy will be there. So your total energy we can write there final your VR2 minus your energy VR1. Now we will solve this one. As we will solve then answer will be there. हम एनर्जी निकालेंगे. अब हमें पता है एनर्जी क्या होती है. First we will find the energy on the distance here 2r. Use there your minus gmm by your 2r. Total energy is this one. So use here minus g is equal to your 6.6 into 10 raised to power 11 into your mass of the earth given, not given. So here we know about this one beta, mass of earth 6 into 10 raised to power 24.
This is mass of earth only. Next mass of the body given in our question, that is your 400 kg. Divide by 2 into your r. Okay, this one r, 2 into your r. Here small g is given, beta. You can convert into small g also. Yes, na? Because we know about this one. Small g is equal to your g m by your r square. One method of this one solve like this one. Second one we can convert in a small g also. When we will multiply and divide with your r, then this one factor will be equal to your small g. So energy we can write there, beta, g m r by your 2. This one also relation we can use, and this also you can use there. Here r is given your 2r, this one your 2 4. R2 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, जो कि क्या गिवन आपको 4r. So r is given here, radius of the earth, and r we can use there. Here we are putting value of r only. Put here value of r. This one equal to your 6.4 into 10 raised to power 6 meter. ओके, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके सोल्व कर लेंगे बेटा. 6 to 6 cancel out, 4 to 400 will be left there, 2 to 3.3 will be there. Clear? Anything other left? No. 3.3 into 10 raised to power 11 into 100 into 10 raised to power minus 6. 6.4 है बेटा, इसको राउंड ऑफ 6 ले लेंगे, बिकॉज इट विल बी कैन इजीली सोल्व. हियर 6 10 रेज़ टू पावर 6, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. ओके, सो हियर 3.3 into 10 रेज़ टू पावर 11 12 13, देन हियर minus 6. दिस वन विल बी जूल. ओके, सेम फॉर u r1 के लिए हम अप्लाई करेंगे. देन यू कैन फाइंड देयर u r1. नेक्स्ट u r1 के लिए माइनस जी एम एम बाई अगेन यूर 2r और r हमारे पास क्या गिवन है. दिस वन आवर फॉर्मूला इज वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स 6.6 into 10 raised to power minus 11. Mass of the earth 6 into 10 raised to power 24, and your mass of the satellite given है 402, and आपको r given है 2 capital R, और capital R we are using here radius of the earth 6.4 into 10 raised to power 6. क्लियर? फिर से सोल्व कर लेंगे. इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा आपका, then here this cancel out, 2 to the 4, then here will be left your 100 only. So here will be left 6.6 into your 10 raised to power minus 11 into 10 raised to power, this one your 24, and here 6, then here left your 80. I hope here some problem is there. 24 छोड़ दिया था बेटा यहाँ पे 24, एंड हेयर पावर इज माइनस, तो यहाँ पे हमने 24 छोड़ दिया था, ये और ऐड करेंगे यहाँ पे 24. नाउ वी विल सॉल्व दिस वन. हेयर पावर 3 क्या आ जाएगा आपके पास 3.3 इंटू पॉजिटिव है 26 हो जाएगा, इधर पावर, इधर माइनस 11 माइनस 6, then it will be minus 17. इधर क्या है 2 और इधर 24 26, तो 26 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 6 और 3 9 बचेगी आपके पास. ओके, तो यहाँ से ये सेकंड की एनर्जी आ गई. इसी तरीके से इसकी एनर्जी सोल्व कर रहे हैं बेटा, इसको सोल्व करेंगे. हेयर विल लेफ्ट, हमने पावर सोल्व कर ली. नाउ हेयर 6.6 into 10 raised to power 10 2 और 18 20, और 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 9, माइनस 6.6 into 10 raised to power 9 जूल. ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, एक ये आ गया,
energy, this one energy for 4r and this one energy for your u इनिशियल पोजीशन. तो टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, UR2 माइनस UR1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हमारे पास क्या आई थी यहाँ पे, दिस वन एनर्जी इक्वल टू 3.3 इंटू 10 रेज़ पर, नेगेटिव है बेटा, यहाँ हर जगह नेगेटिव चलता आ रहा है. 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 जूल माइनस 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस फाइनल, और एक माइनस ऑलरेडी 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9. Okay, after subtracting it, then here will left here 6, this one will be plus, then here will left 3.3 into 10 raised to power 9 something. Clear? ये वाली एनर्जी आ जाएगी. Now we are checking option 3.3 something. 3.13 will be there बेटा. Exact not come because यहाँ पे हमने 6.4 का राउंड ऑफ यूज कर लिया था, 6 यूज कर लिया था सोल्व करने के लिए. So 3 is B option will be right option using this one. ओके, जहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगे न्यूमेरिकल में तो उनका राउंड ऑफ करके हम सोल्व कर लेते, दैट विल बी इजी टू सोल्व इट. दैट्स व्हाई हियर बी विल बी राइट ऑप्शन ऑफ दिस वन क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर लेवल. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा दीज क्वेश्चंस. देन थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे आवर वीडियो.